हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लेशनरी गैप। केन्स ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। सो इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है? इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द अवेलेबल आउटपुट एट बेस प्राइसेस। किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो दे आर कीन टू स्पेंड इट, टोटल डिमांड जिसकी वजह से बढ़ती है, और क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स इकोनॉमी में इन कंपैरिजन टू डिमांड कम रह जाते हैं। तो जो गैप अराइज होता है उसी गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। वॉर टाइम की अगर हम बात करें, वॉर टाइम की जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है और लोग इंटरेस्टेड होते हैं टू बाय कंजम्पशन गुड्स, बट सप्लाई इन चीज़ों की शॉर्ट हो जाती है बिकॉज प्रोडक्शन फैक्टर्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल्स। सो जो डिफरेंस क्रिएट होता है क्वांटिटी ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन गुड्स और जितनी भी अवेलेबिलिटी गुड्स की मार्केट में है उसके डिफरेंस को, उसके गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। सो इन्फ्लेशनरी गैप को समझने के लिए सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, दैट इज an excess of anticipated expenditure over available output at base prices। इसे हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से क्लियर करते हैं। सपोज टोटल आउटपुट कंट्री की ड्यूरिंग वॉर 1500 करोड़ है, एंड आउट ऑफ दिस 1500 करोड़ आउटपुट प्रोडक्ट वर्थ 300 करोड़ are purchased by government for war purpose. So these are war purchases by government. So available goods for consumption for economy, that is 1200 crores. Monetary income in the country is 1800 crores. Out of such income, 400 crores are paid to the government for taxes. So disposable income in economy is 1800 subtract 400, 1400 crores. Now people have 1400 crore rupees as disposable income. Against these 1400 crores, available output is 1200 crores. So inflationary gap is 1400 less 1200, 200 crores. इसे एक डायग्राम की हेल्प से फर्दर क्लियर कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस पे लेंगे हम इनकम और वाई एक्सिस पे हम लेंगे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व को प्लॉट कर लेंगे एट 45 डिग्री एंगल। आफ्टर दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस एग्रीगेट डिमांड कर्व इज कंप्राइज्ड ऑफ consumption, investment and government expenditure. Equilibrium is established at point E and level of income is Y1. If aggregate demand curve rises, and it rises just because of increase in government expenditure. So with this
demand curve, there is a gap from equilibrium, that is EF. This point is E and the next point is F. This gap is known as inflationary gap. Next equilibrium would be at E1 and level of income would be Y2. Equilibrium was at point E. Due to rise in aggregate demand, there is a gap between equilibrium and the next aggregate demand curve. Such gap is known as inflationary gap, and that gap would persist until economy would get settled at next equilibrium point. Till that level, prices would tend to rise, and such rise, such inflation would be vanished when aggregate demand and aggregate supply will create new equilibrium at OY2 income level. So this is inflationary gap. In simple terms, excess of expenditure over available output. This is the main reason of demand pull inflation.